तो आइए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र से शुरू। हमेशा बीजेपी के आगे हमेशा मुद्दाहीन रहने वाली कांग्रेस पार्टी आज एक बार फिर अडानी मामले को भुनाती नजर आई, जिसके तहत लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने अडानी हमले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन एक और जहां इस मामले पर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मौका तलाश रही है, वहीं दूसरी ओर इसके इंडी सहयोगियों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ दिया। आपको बताएं कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जैसे समाजवादी पार्टी, टीएमसी और ये दल नहीं चाहते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस संसदीय कार्य को रोके रखे। वास्तव में कांग्रेस का यह सख्त रुख था कि जब तक सरकार अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर चर्चा करने के लिए सहमत नहीं होती है, तब तक संसद को काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के इस रुख को लेकर अन्य विपक्षी दलों में संशय की स्थिति आने से कांग्रेस के रुख को भी बदलाव वहां पर करना पड़ा और आखिर संसद के सुचारू रूप से चलाने पर कांग्रेस पार्टी सहमत हो गई। वास्तव में कल यानी बीते सोमवार को कोई विधायी कार्य ना होने के बाद आखिरकार सरकार को एक सफलता मिली है। सरकार और विपक्ष संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तारीखों की घोषणा कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंगलवार से दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक में यह सहमति बनी है। स्पीकर के साथ सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। सभी ने इस पर चिंता जताई। सांसदों ने कहा कि हमने भी कहा है कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए संसद आते हैं और संसद का कई दिनों से ठीक से काम ना करना ठीक नहीं है। इसके बाद सदन में सामान्य स्थिति बहाल हो और संसदीय कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का। रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण अगर कोई बिल पारित करना है तो हम तो वैसे ही पारित कर देंगे। अगर अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो भी हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। तो जो मुद्दा उठाते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कोई विषय उठाया तो विषय उठाएगा तो स्पीकर या चेयरमैन उसको देखेंगे कि परमिशन देना है कि नहीं देना है। अगर कोई यूएस कोर्ट में, अमेरिका या ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, किसी कोर्ट में किसी भारतीय का खिलाफ कुछ भी जजमेंट देते हैं तो क्या संसद चर्चा करते रहेंगे क्या? दुनिया में लगभग 5 करोड़ भारतीय हैं, भारत के बाहर भी। तो हर एक भारतीय का कोई भी लीगल केस हमारे पार्लियामेंट में चर्चा करते रहेगा क्या? हमारा पार्लियामेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, एक सिस्टम होता है। पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा था सरकार की तरफ से। विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि संभल पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था अजमेर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि अदानी का जो इंडाइटमेंट है उस पर चर्चा हो। ये सब देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं। देश में उनकी भागीदारी है और देश के सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये। पर सत्ता पक्ष जो है उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहा था, लगातार हाउस को अडजर्न कर रहे थे। 15 मिनट पार्लियामेंट का शुरू नहीं हुआ कि आप अडजर्न शुरू कर देते हैं। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी देश के मुद्दों को रखने की जिम्मेदारी दी है, जो ब्लॉक किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू होगी। हम सब पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा हो, देश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो। पर जिस तरीके से स्थगित हो रहा था वो दर्दनाक था। अब ये एक स्पिरिट में, ये कोऑपरेशन की स्पिरिट में शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी अहम मुद्दे हैं
और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की जो भी सवाल है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट पहले दिन से ही चलता अगर सरकार विपक्ष का सुझाव मानते। पहले दिन ही विपक्ष ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि 2 दिन का संसद में एक चर्चा हो हमारे संविधान पर, लेकिन किसी कारण से, किसी विशेष कारण से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और लगभग 5 दिन सदन के महत्वपूर्ण समय नष्ट हुए। तो बांग्लादेश जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लोकसभा में बात चल रही है। रविशंकर जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे बांग्लादेश के मुद्दे पर, आइए सुनवाते हैं। And to emphasize the seriousness of what its unprecedented disruption लोकसभा में बात रख रहे हैं बांग्लादेश पर, आइए सीधा सुनवाते हैं। For our overall relationship. The situation arising after our counter deployment in 2020 called for multiple sets of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This, sir, has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. In all of this, we were and we remain very clear that the 3 key principles must be observed in all circumstances. 1, both sides should strictly respect and observe the LAC. 2, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And 3, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. Honorable members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. In the new circumstances, it was obviously not possible to continue the normal exchanges, interactions, and activities as in the past. In this regard, we made clear that the development of our ties were contingent on the principles of mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Throughout this period, honorable members would also be aware that government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. Sir, the House will remember that on October 21, the October 21 agreement is the latest in the series of an understanding in regard to the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events in May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in 10 September 2020. The government's position at that time was that the immediate task was to ensure comprehensive disengagement of troops in all the friction areas.
It was emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. For the benefit of honourable members, I would also flag to your attention previous positions articulated by the government in Parliament on this issue. On 15th of September 2020, Raksha Mantri ji had made a detailed statement on Chinese attempts to transgress the LAC and the appropriate response given by our armed forces. On the 11th of February 2021, Raksha Mantri had again briefed the House about our disengagement agreement in the north and south banks of the Pangong Lake. Thereafter, in August of 2021, a third phase of disengagement took place in the area of Gogra, whereby troops would henceforth be in their respective bases. The next step took place in September 2022, pertaining to the Hot Springs area. Again, forward deployments ceased in a phased, coordinated and verified manner, resulting in the return of troops to their respective areas. The most recent agreement, the October 21 agreement, comes in the wake of the earlier ones. It completes the first phase of what we had agreed to in Moscow in September 2020. As members are aware, there is a long history of frictions, transgressions and face-offs in several sectors of the India-China border. This goes back to Barahoti from 1954, to Longju in 1959, to Sumdurongchu from 1986-1995, and Depsang in 2013, amongst others. In the past, earlier governments have agreed to a range of steps to diffuse situations that have arisen at different times, including offers on our side to create demilitarized zones, limited non-patrolling zones, relocation or withdrawal of posts, disengagement of troops, and dismantlement of structures. Different locations have seen different solutions being examined. Where the October 21 understanding is concerned, our objective has been to ensure patrolling as in the past to the relevant patrolling points, as well as resumption of grazing by our civilians as per long-standing practice. This is indeed what we have agreed upon in regard to Depsang and Demchok. In a few